Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to Adil Tech Talks. Today's lecture is about linear search. Linear search is a traditional searching method. Traditional searching method means it is a very old searching method, and it is not only specific to computers and computer sciences, but in normal life, while searching different items in some lists, usually this method is was employed. It is a very slow method. It takes long time to search an item in larger lists. इस सर्चिंग मेथड को अक्सर बड़ी लिस्ट्स पे जिसमें एलिमेंट्स की तादाद ज़्यादा हो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इज़ हायर, तो वहाँ पर इसको एम्प्लॉय नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक लॉन्ग सर्चिंग मेथड है. ये सीक्वेंशली एलिमेंट्स को सर्च करता है. इट प्रोसेसेस sequentially. It starts from the first element and then goes to second and so on. Process of searching an item starts by comparing the item with first element of the list. इस सर्चिंग मेथड में जो सर्चिंग प्रोसेस है वो आप स्टार्ट करते हैं अपने आइटम को लिस्ट के पहले एलिमेंट के साथ कंपेयर करके. इफ़ देयर कम्स अ ट्रू मैच द प्रोसेस स्टॉप्स देयर. अगर पहले ही आइटम और लिस्ट का पहला एलिमेंट आपस में मैच कर जाएं, इफ़ दे बोथ मैच, द सर्च स्टॉप्स देयर. प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा और सर्च सक्सेसफुल का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा. इन केस ऑफ नो मैच, लेकिन अगर पहला एलिमेंट और आइटम टू बी सर्च्ड मैच नहीं करते, द पॉइंटर इज़ अपडेटेड टू नेक्स्ट एलिमेंट. ये पॉइंटर हम नेक्स्ट एलिमेंट पर ले जाएंगे एंड द प्रोसेस इज़ रिपीटेड. फिर उस वहाँ पे कंपैरिजन होगा और उसके बाद हम फिर आगे जाएंगे. At any instance where there is a true match, the process ends. कहीं भी, in any part of the list, when the item to search matches with the element of the list, the process stops right there and the process ends. In case if there is no match and the list finishes, आप एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, उसे सर्च कर रहे हैं, लेकिन आपकी कंपैरिजन करते करते आप फाइनल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं और मैचिंग नहीं होती, लिस्ट एंड हो जाती है, तो देन प्रोसेस एंड्स विद द मैसेज सर्च अनसक्सेसफुल. अब इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन परेड होती है या जैसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड ऑफ सपोज क्रिमिनल्स, वेयर कोई एक बंदा है जो कि किसी क्रिमिनल को अगर जानता है तो उसको एक इन्वेस्टिगेशन परेड में डिफरेंट लोगों को दिखाया जाता है, डिफरेंट जो क्रिमिनल्स होते हैं, और वो वहाँ पे पहले को, दूसरे को, तीसरे को देख के वो कंपेयर करके बता देता है, उससे जो मालूम होता है कि भाई इनमें से कोई एक क्रिमिनल है या नहीं है. लीनियर सर्च is applicable on arrays, queues, stacks and linked lists or etc. जहाँ कहीं हमारे पास लीनियर अरेंजमेंट होगी वहाँ हम लीनियर सर्च को अप्लाई कर सकते हैं. आप जानते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट एंड नॉन लीनियर अरेंजमेंट ऑफ डाटा. तो जहाँ कहीं लीनियर अरेंजमेंट होगी, वेयर देर इज़ अ लीनियर अरेंजमेंट, वी कैन सिंपली एम्प्लॉय देयर द लीनियर लिस्ट, लीनियर सर्च. Now the algorithm, linear search algorithm. Try steps: I gets 1, found gets false, while I is less than or equal to max, and found is equal to false. Start of while loop. Step A. If ai, ith element of array A is equal to item, then found becomes true, found gets true, else I gets I plus 1. End of while loop. Step number 4. If found is equal to true, then display search successful, else display search unsuccessful. 5. Exit. Now you have to write it down with your on your notebooks, this algorithm. Where, what are these what are these variables? I is the counter variable used for while loop. I is the counter variable that is used to control the iterations of the while loop. Found is a boolean variable or that behaves like a boolean variable. अब ये जो फाउंड है ये आपके पास एक, आप इसको बूलियन वेरिएबल के तौर पे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो इसे कोई और, जैसे कि इंटीजर आपने डिफ़ाइन कर दिया, लेकिन इस पर 2 वैल्यूज़ फिर होंगे, जैसे कि एक 0 और एक 1.
तो आप कंसिडर कर लेंगे कि 0 मीन्स एलिमेंट नॉट फाउंड and 1 means element is found. In algorithm we are going general, so we are using two terms, false and true. False means element is not still found and true means element is found. Okay, item is an element to be searched in array A. item वो एलिमेंट है जिसे हम array A में सर्च कर रहे हैं. अब हम इस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसकी एग्जीक्यूशन को चेक कर लेते हैं. ओके, एग्जीक्यूशन. सपोज this is an array A1, A2, A3 and A4 with some elements A, B, C and D, and we want to search item A. Now as the first step of algorithm says I gets 1, so I is 1. Second says false, sorry, second says found gets false. In third step we have to set up the while loop while I is less than or equal to max and found is equal to false. Now here we know that max is 4, the upper bound. So by putting the values I is 1, 1 is less than or equal to 4, yes, 1 is less than 4, found value is false. False is equal to false, yes, found is equal to false, false is equal to false. Now we can execute the loop, while loop, where the step is if ai is equal to item, i's value is 1, a1 is equal to item to be searched is a, the value at a1 is a is equal to a, yes, so then will be executed. Then found gets true. From here we will go back to the step number 3. Now there is no change in i's value, 1 is less than 4, yes, but found value is changed to true. True is equal to false, no, true is not equal to false, so the loop gets terminated. End of while loop. Now step number 4, if found is equal to true, yes, the value of found is true is equal to true, then display search successful. The search has become successful. Okay, now we try to execute another example. I have to, okay,
A1, A2, A3 and A4, an array with elements A, B, C and D, where max is 4, and suppose now this time we want to search element D. So step 1 is I gets 1, 2 found gets false, 3 while I less than or equal to max and found is equal to false, I 1 less than 4 yes and found's value is false, false is equal to false yes, both conditions are true. So step A of the while loop is if A I is equal to item is D, I is 1, the element at A1 is A is equal to D, no. So else portion execute होगा, else portion will be executed. I gets I plus 1, 1 plus 1 means I value is now 2. Now 2 is less than 4, yes 2 is less than 4, found is still false, false is equal to false, yes false is equal to false. So the value I is shifted to this point. Now at I A2 we have B. Is this B is equal to D? No, B is not equal to D. So once again I is incremented by 1, 3. 3 is provided to this step. 3 is less than 4, yes. False is equal to false, yes. And 3, at 3 we have got C. C is equal to D, no, C is not equal to D. So once again I is incremented by 1 and the result is 4. Now 4 is equal to 4, yes 4 is equal to 4. False is equal to false, yes false is equal to false. Now at 4 we have got the element D, and we are searching for the item D. D is equal to D, yes. Then statement will be executed. The action of then is found gets true, and here the condition true is equal to false becomes false and loop gets terminated. End of loop. And after this, at step number 4, if found is equal to true, true is equal to true, yes. So search successful message will be displayed. So this was something about the execution of the algorithm. So in this video we try to understand the concepts and the theories of linear search, its algorithms dry step, and then we executed the algorithm algorithms steps. So you are required to practice these steps with you also and design program for this algorithm in any computer language of your choice. Okay guys, please subscribe my channel, like the video, share the video, and invite other friends also to subscribe my channel. Thank you.